Good evening, everyone, and welcome to this webinar series. And today we have ninth session on by this Board of Internal Audit and Management Accounting. And friends, we are fortunate to have today our Vice President of Institute of Chartered Accountants of India, CA Charanjot Singh Nandaji. Nandaji, welcome you. And we also have Chairman of our board, CA Prakash Sharmaji. And as all of you are awaiting for this every Wednesday 5 to 7, and today is the ninth webinar series, and we have CA Gaurav Mishra who will be taking us through the journey of this procurement to purchase the internal controls, and Jatin Fuya and Darshan Shah as a moderators. So with these words, I welcome all of you to this ninth webinar of this year. And we are fortunate that Nandaji has always, been the internal audit person and was chairing this board earlier. And we are fortunate to have this. I am fortunate to be the vice chairperson of this board, and Prakash Bhai being the chairman. The board is really doing a lot of activities, and I request now CA Prakash Sharma, who is the chairman of the board, who is taking a lead to do a lot of activities, sharing the knowledge to the members. So requesting Prakash Bhai to share his words of wisdom. Thank you, Preeti ma'am. Respected Honorable Vice President of our institute, Nandaji, my very dynamic Vice Chairperson, Preeti ji, Secretary of my board, Aarti ji, my other office bearers of institute, and today's speakers and the participants. I welcome you all in this session, and let me share with you that this internal board is very, very important, and the stage where it has come, it is because of our Vice President, sir. It is a brain of our Vice President, sir, that most of the time he had been heading this particular board, and he has reached to the stage that, let me share with you, that in Pakistan Institute, they have taken permission from our institute. We have given them permission. They are using our standards for internal audit in their institute and for their course, as well as in Maldives. We are going to start a course for internal audit in the first week of June. All these efforts are Mr. Nanda's efforts. He was working very hard in this particular internal audit board, and the stage where we have come. I'm really thankful to Nanda Sahab for bringing this particular board to this stage, and where day by day the internal controls are becoming very, very important. So this board is becoming very important, and you can see how much this particular board is close to our Vice President, sir, that he himself is present over here. So I will not take much of the time. And again, to MOC Preeti ma'am. Thank you. So now it's a time. Thank you very much, Prakash Bhai, for your words of wisdom and allowing all the activities and leading all the activities from the front for this board for the benefit of our members and other countries also. And now it's a time to hear to our Vice President, sir, who has always been the torchbearer and supporting all the activities of this board of internal audit. Whenever we speak to any speaker or anyone in the arena of internal audit, the first name comes to their mind is our own Vice President, Nandaji. So Nandaji, you have always taken a mark for internal audit, and we are happy that you are here to address all of us. So I request you to please share your thought process and words of wisdom to all the participants. Thanks a lot, Preeti ma'am. A very good evening, ladies and gentlemen, my dear participants. The Honorable Chairman of the Internal Standard Board, CA Prakash Sharma, who hails from Jaipur. The Honorable Vice President, CA Preeti Savla, who hails from Mumbai. My younger brother and Speaker of the Day, Gaurav Mishra,
who comes from Allahabad. We have two of the very reverend chartered accountants as moderators, CA Darshan Shah, CA Jatin Furia, the secretary with whom I have worked for over, secretary of the board, Aarti Bansal, with whom I have worked now over 18 years. Arun Agarwal, again one of the pillars of the board. Ladies and gentlemen, I am truly honored to be amongst you. And more importantly, I am nostalgic. It seems I have come to my school. It's an old friend get together. I remember over years, we used to do programs every Friday, every Wednesday. And I'm so happy that the leadership, both Prakash Bhai and Preeti Ben, both have kept the tempo of educating members at the highest level. Today's webinar on risk and control in procurement to payment process is very important. I'm really thrilled to be addressing this esteemed webinar organized by the Board of Internal Audit and Management Accounting of ICI. Today, we gather to delve into a topic that lies at the core of every organization's operations, the procurement to payment process. And its essence, the procurement to payment process is the lifeline that ensures the seamless execution of goods and services, all while adhering to organizational policies and regulatory requirements. However, as integral as this process is, it's not without its hurdles. It carries with it so many problems, so many bottlenecks. So, from procurement planning to payment authorization, each step presents its own unique sets of risks that, if left unaddressed, can pose significant threats to an organization's bottom line and reputation. Identifying these risks and implementing robust controls is paramount. It's the difference between merely navigating the process and truly mastering it. By proactively identifying risks and implementing controls, organizations can reap a multitude of benefits. They can mitigate risks, reduce costs, enhance compliance, improve efficiency, build stakeholder confidence, make strategic decisions, and drive continuous improvement. Today's webinar serves as an invaluable platform to explore these concepts further. We have the opportunity to gain insights, share experiences, and learn best practices from industry experts and peers alike. I encourage each of you to actively engage in the discussion, ask questions, and absorb as much knowledge as is possible. Ladies and gentlemen, more importantly, I would like to tell you that the entire concept on which internal audit thrives is largely your thought process of creating value. You are all aware that internal audit essentially is a management function. So that competence is very important. I'm reminded of a couplet which says, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई लाजवाब होता. All people who are outstanding, who have the credence to perform and create value, are people who have led their life into the entire process. If you go into risk and controls corresponding with various stages of payment to procurement process, you would see the first thing is the procurement planning. Planning is very pertinent to any audit structure. Second is sourcing and supplier selection. That is again very important. At times you find fake suppliers. You have to ensure that whatever they present, whatever they give is at the highest level, and more importantly, adds value to the perspectives and visions of the organization. Contract negotiation and formation, which is again very, very important. You have to create the contracts and create infrastructures whereby you are able to effectively add value to the entire perspective. Online placement, again, very, very important. Online placement puts things into such a perspective that you are able to effectively understand the risks and the corresponding controls to ensure that things move to the right esteem. Not speaking much, I would like to conclude here by saying that the entire process has to be understood. There should be no loopholes in the process, and internal controls have to be so strong that every process is seamlessly tested, and more importantly, the thought process of creating value by the internal auditor is clearly exhibited, not only in your deeds or presence, but in your reports also, where you have to highlight certain issues
that could educate the management and tell them what are the most important ingredients which are required to conduct this facet of the audit. I thank the Internal Standard Board, the chairman, Mr. Prakash Sharma, the secretary, Madam Preeti Savla, the vice chairman, Madam Preeti Savla, the secretary of the board, Madam Aarti Bansal, and all, including the speaker, Mr. Gaurav, who have taken pains to make today's program a great success. I wish this webinar all success, and I'm so happy to be a part of it. I'm truly honored to be amongst you. Thank you. Have a nice webinar ahead. Thank you. Thank you so much. Sir, thank you so much for your vast experience, what you have shared. And I was talking in the beginning when we have taken the chairmanship and vice chairmanship of the board. So one of the faculty, a very renowned faculty, I was talking for the activities of the board. So I told कि I have been appointed as a vice chairperson. हाँ नंदा जी है ना chairman. मतलब मैंने बोला सर अभी तो वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं. मतलब whenever internal audit name comes, Nanda ji is always there in the minds of everyone, and we can we can hear out that what he has shared on the topic also today. So thank you very much, sir, for presenting and coming over here and sharing your vast knowledge as a vice president. Also, sir, thank you so much and for your gesture. Thank you. Over to the moderator. Thank you, Pritivan. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to introduce our esteemed speaker for today. CA Gaurav Mishra is a visionary in his field, a thoughtful leader whose insights and expertise has inspired many and continue to drive positive change. CA Gaurav Mishra is a chartered accountant, passed in 2016. He hails from holy city of UP, Prayagraj, the city of Sangam. He is working with one of the big four as a manager into risk consulting practice. His core area of work is internal audit, process transformation, and business process consulting. He has been nominated as co-opted member of internal audit committee of WIRC of ICAI in 2021 and 2022. He was a co-author of the book Internal Audit Guide for Small and Medium-Sized Practitioner, published by WIRC of ICAI. With his extensive background in risk management, internal audit, and consulting, CA Gaurav Mishra brings a wealth of knowledge and experience to the table. He has dedicated his career to the field of risk management, controls, and internal audit. Throughout his career, CA Gaurav Mishra has demonstrated a remarkable ability to assess and control the risk. Today, CA Gaurav Mishra is here to share his insights on risk and control in procurement to payment process. I have no doubt that his presentation will be both enlightening and engaging, offering us all a perspective on auditing procurement to payment process. Please join me in giving a warm welcome to CA Gaurav Mishra. First of all, good evening to everyone. And good evening to Nanda sir and Preeti ma'am and the chairman of this particular board, Prakash Sharma sir. Before starting this particular, my favorite topic on the internal audit, which I started liking because it is one of the incidents that I came into the IA profile. But before starting of the session, I must say one thing that I got an opportunity to work with Preeti ma'am as well as Nanda sir. So I worked with Preeti ma'am in the WIRC under the chairmanship of Lalit Bajaj and Murtaza Kachwala. And in that particular, Preeti ma'am was also one of the core committee member into the internal audit. Nanda sir, I got an opportunity to work with Nanda sir. He directly called me when in 2022-23 when he became the chairman for the board of internal audit, and he called me that you need to do all these things in terms of the checklist, in terms of the processes and all. This was like a dream come true when you get a call from any head office, central council member, which is again your dream. So Nanda sir, thank you so much, and Preeti ma'am, thank you so much that I personally got an opportunity to work with you leaders. And now come to the process on the procurement to pay.
internal audit, since it's a one of my favorite area, and why I like this particular area. Nanda sir in the one of the conversation today he said कि आज की डेट में इंटरनल ऑडिट एक पूरा 360 डिग्री अप्रोच है. सर इट इज टोटली करेक्ट दैट as an internal auditor you get a lot of opportunity apart from the financial numbers. You will get to learn how the business are running, how the particular operations are running. As a chartered accountant, it is really you can say that good opportunity for the internal auditor, that you have ample number of opportunities to work in the finance, to work in the operations. As a business as a whole, you will get to know that yes, how this particular sector are running. Now come to the topic on this procurement to pay. There's a old saying, लोग बोलते थे कि इंडस्ट्री में दो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा टफ होते हैं. एक डिपार्टमेंट होता है जो प्रोक्योरमेंट, दैट इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया, एंड सेकंड वन इज स्क्रैप. These two areas are the gray area, and the person heading this particular positions always have some question mark. Now the thing is, why these particular two areas have a question mark? There are some other profiles also, but yes, since the value involved, because let's take one example. If a procurement person, or if you can say that, I'll take the example for the manufacturing company. A manufacturing company, they have a procurement of, you can say that, around 1,000 crores in an entire year. But 80% of the procurement is being done from the multiple vendors in terms of the raw material like steel, copper, and aluminum. Now you think from the perspective that if 0.5% savings can be done by that particular procurement head, it is going to impact your bottom line item. आपने प्रोक्योरमेंट से 0.5% का नेगोशिएशन करके आप एक वैल्यू को आपने कम करा, assume 1000 into 0.5%, it is directly going to impact your profit. But now the second part is how the risks are involved in this particular procurement to pay process. When you are going to negotiate with any of the vendor, negotiation, identification of the vendors, implementation of the technology, these are always subjective, not objective. Like I can do the negotiation with any person, but if that negotiation comes with a darshanji, that negotiation might come at -1 rupees. बिकॉज आप जो नेगोशिएशन करते हो उस नेगोशिएशन आप सामने वाली पार्टी से डील कैसे करते हो, हाउ यू आर डीलिंग विद द वेंडर्स इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन. नाउ द क्वेश्चन कम्स that how negotiation is subjective or how it is questionable. It is questionable if you are not having the knowledge about the particular product, particular services, detailed knowledge. You are not having enough knowledge or ample knowledge about the market trends, market conditions. You cannot do well in negotiation with any of the vendors. And this is again the subjective. A lot of people who are very receptive to the market, who are updated to the market, that what are the trends are going, what is the international market situation. A lot of commodities are dependent upon the international market, demand and supply. That's the reason why procurement is always a subjective. Negative negotiation is always a subjective thing, not an objective thing. In today's session, I tried within 2 hours of session, it is not possible for me also that to cover each and everything in depth. But yes, I will try to cover the best possible way in case of the procurement to pay process. The high level of risk I'll definitely going to cover. But before setting the agenda, before showing the PPT to you, it's a request from you that please ask many questions to the extent possible. Whatever the doubts you are having, please ask, please post in the chat box so that I'll be knowing that yes, people are interactive and listening this particular session. And it is all about the knowledge sharing session, not a one-sided of the communication. Now the second part comes. If we talk about procurement to pay, then what are the activities involved? What are the stages involved into the procurement to pay process?
Just think from the normal perspective. Let's take one example of the household. In case of household, how we do? Suppose if you want to buy a car, then is it your direct decision to go into the market, to go with the dealer and then buy the car? No, it is not. The situation is like that. You will start thinking that yes, you are planning to buy a car. Now the thing is, when you start planning, you will consider the fact of amount involved, that what is your budget, how much amount you are going to spend from your own pocket, and how much money you are going to borrow from the market. The second part, suppose if you did the planning, since last 2 months or 3 months, you are planning to buy that, yes, now I'm very sure that there is a necessity to buy the car. Now your entire planning function freeze. The next step is which car you need to buy. Which car you need to buy. Then you will identify the brand. And if you're identifying the brand, it means that you're now identifying the material specification that yes, I need this particular car. If this particular feature fit in any of the brand, if any brand is not the preference, then you are going to buy that particular car. Now the third part is your entire planning is freezed, your specification is freezed. Now the third part is you will identify the dealer who can give you the best discount. Now the question will be, if the dealers in the city, there are two dealers, both are from the Maruti Suzuki, whether the rates can differ, definitely the rates can differ. I'll not say there will be much difference, but there will be some difference. Some will give you the accessories at free of cost, some will give you the accessories at cost. All these things you are going to consider. After considering all these factors, you will finalize that yes, this is the dealer from whom I am going to buy a car. So this is called as a vendor finalization or vendor selection. Now the part comes, you will go and make the payment. Payment can be into any mode, it can be into cash, it can be to the bank, it can be to the check, or it can be to any of the. After once you make the payment, you will get the delivery of the car. Means you have received the material. And after material receipt, your entire, you can say that car registration, entire statutory formalities will be done. This is a scenario into the entire procurement to pay process you are going to see into my conversation. But now the thing is, if you see that there are multiple things, you will see into the slide, definitely lot of technical words that what are these terms. I'm not going to go at a high level wordings and all. I'll try to explain in a very layman language that procurement hota kya. And let me tell you one thing that yes, procurement to pay process, as a chartered accountant, अगर हम कहीं पे भी ऑडिट करने जाते हैं, this is one of the common process जहां पे मैनेजमेंट का ध्यान होता ही है कि मैं अपने प्रोक्योरमेंट में फ्रॉड इंडिकेटर्स को पता लगा, लीकेजेस को पता लगा, मैं अपने प्रोक्योरमेंट कंट्रोल को विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, विद द हेल्प ऑफ डिजिटाइजेशन, हाउ आई कैन strengthen my control, how I can build the robust control mechanism. One thing into the audit, or you can say in terms of the risk, which I will say, आप रिस्क को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, बट रिस्क को मिटिगेट तो कर सकते हो. But if you want to mitigate the risk, you have to implement a lot of robust control to mitigate that particular risk. एक लेमन एग्जांपल मैं बताऊं, आपके घर में आग लगने की संभावना, आपकी फैक्ट्री में, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द फैक्ट्री.
फैक्ट्री में वेरी जनरल कॉन्सेप्ट इज दिस कि आपको अपनी फैक्ट्री को आग लगने से बचाना है, और अगर आग लग गई तो उसके नुकसान की भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक रोबस्ट कंट्रोल लगाना है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। आग लगने से बचाना है तो क्या करोगे? फायर एक्सटिंग्विशर यू विल इंस्टॉल एट मल्टीपल लोकेशंस विद इन द फैक्ट्री। बट नाउ द सेकंड पार्ट कम्स। ये तो मिटिगेट आपने करा एक लेवल पे कि आग फैक्ट्री में नहीं लगे, बट नाउ द सेकंड पार्ट कम्स। इफ फायर अकर, देन व्हाट इज द सेकंड मेजर? द सेकंड मेजर वुड बी कि अगर आग लग जाती है तो मुझे क्या करना है? फैक्ट्री का इंश्योरेंस पहले से लेकर के रखना है। सो यू कैन मिटिगेट द रिस्क टू लार्ज एक्सटेंट, बट यू कैन नॉट completely end the risk. There's one more example. सर आपने तो बोला कि मिस्टर गौरव, आपने ये बोला कि रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो बट आप एंड नहीं कर सकते। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल फॉर द इनहेरेंट रिस्क। अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी नुकसान होता है, इन्वायरमेंट की वजह से कुछ भी नुकसान होता है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। मुंबई में जैसे कल एक काफी तेज सा तूफान आया, स्टॉर्म आया। Was it predictable? It was not predictable that कि आपका इतना तेज तूफान है। अगर एक दिन पहले पता भी चलता है तो क्या हम इमीडिएट कोई स्टेप ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। So there are certain things which are inherent to the risk. These are the inherent limitation of the risk. So the thing which is very important to note here, that risk can be mitigated but risk cannot be completely wipe off नहीं कर सकते। Now you will see what I have done here. I have tried to bifurcate the entire procurement process into three categories. The category is, first is ordering process. अगर मैं ordering process की बात करूं, so your function of the procurement planning, your function of the market analysis, your function of the vendor identification, your function of the raising of the purchase requisition or requirement, your function of the raising of the quotations, floating of the quotations to multiple vendors, then finally negotiation, and then the last step is issuance of the purchase order or enter into an agreement with the party. These are few of the steps which comes under the ordering process. Now the second part, आपने मटेरियल ऑर्डर कर दिया, अब ऑब्वियस सी बात है वो मटेरियल आपकी फैक्ट्री में आएगा। इन आर एग्जांपल भी तो कि हमने पेमेंट करा पार्टी को और पार्टी ने हमको कार की डिलीवरी दे दी। The same concept will apply here, that yes, after finalization of all these things, you will receive the material. But sometimes, my dear friends, please note, if the payment is in advance, it all depends upon the payment terms. If payment terms in advance, then upon making the payment, you will get the material. But if payment is on the credit period, you will get the material before making of the payment. These are the things, or you can say that these are the category into the procurement to pay process. So in the next subsequent slide, I'll say that what is procurement, whether buying of the material is procurement or buying of the services is material. Now the thing is, procurement, what is the difference between procurement and acquisition? There's a very thin line. Procurement और acquisition में difference क्या है? If I tell procurement, आप कुछ भी खरीदो आप procurement होगा, but अगर आप मेरे से बात करो fixed asset में, did you ever see that you tell that procurement of the fixed asset? You will never say. You will say acquisition of the fixed asset.
एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस, एक्विजिशन ऑफ द प्लांट। इट मीन्स जो आपके फिक्स एसेट है, जो आपके गोइंग नियर फ्यूचर में आपको एक वैल्यू डिराइव करके देने वाली है। दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज द वर्ड एक्विजिशन। But if we talk about the procurement, it's the continuous buying which is being used, material or services is being used in generating the revenue or producing any final product or delivering any services. This is one of the important. So procurement is the acquisition of the goods and services at the best possible cost. This is very example. Why I have not written here that procurement is the acquisition of goods and services at cost. See, आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव ये है, एज अ प्रोक्योरमेंट है, आप किसी भी मटेरियल या सर्विसेज को कितने चीप कॉस्ट पे परचेज कर सकते हैं. दैट विल बी योर केपीआई, दैट विल बी योर बेनिफिट. किसी भी मटेरियल या सर्विसेज को बेस्ट कॉस्ट पे प्रोक्योर करना विद द राइट क्वांटिटी विद द बेस्ट क्वालिटी. अगर आपने मटेरियल परचेज करा विद द बेस्ट कॉस्ट बट उस मटेरियल की क्वालिटी ही खराब है, as a procurement head, did you serve the purpose of the procurement function? No, you didn't. क्यों? क्योंकि आपका तो काम था कि भाई यूजर डिपार्टमेंट ने आपको बोला कि मुझे आप ये मटेरियल ला करके दो एंड उसका ये स्पेसिफिकेशन है. आपका केपीआई क्या था कि आपको मटेरियल बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में लेके आ सकते थे. सो बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में लेकर के आना, इट इज योर फर्स्ट केपीआई. But the second KPI you also need to meet, that is the right quality or best quality of the material. That's the reason I have written here that procurement is the acquisition of goods and services at the best possible cost with the right quantity and the quality at the right time. Now each wording, if you see best possible cost, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एग्जाम्पल. What is the risk when there will be a risk that negotiation not done properly? Let me give you one example here. Suppose there's a requirement, you are a procurement head of one of the manufacturing company who is manufacturing steel. The finished product is steel. For producing the steel, you need a lot of raw materials like iron ore, like sinter, like you can say that sponge iron, like coal, electricity, and all those things. But the thing is, आपने जब कोल का प्रोक्योरमेंट, मार्केट से आपने कोल खरीदा, एट टाइम प्रोक्योरमेंट ऑफ द कोल, एज अ प्रोक्योरमेंट हेड, you didn't identify the vendors apart from your existing vendor. This is one thing. Second thing is, आपने जब वेंडर से नेगोशिएशन करा तो उस टाइम पे मार्केट जो फैक्टर्स है, इंटरनेशनल मार्केट में जो फैक्टर्स चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, उन सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर नहीं करें. आपने क्या करा कि आपने तीन वेंडर, आपके यहाँ पे तीन वेंडर थे, तीनों वेंडर को आपने कोटेशन फ्लोट करा, and based on that particular quotation you have negotiated that yes, I am giving the order to Mr. Y. X, Y, Z are the three vendors, but the final vendor is Y. आपने तीन कोटेशन के बेसिस पे वेंडर का फाइनल कर दिया. Is it the right way of doing negotiation? Personally, I'll say no. क्यों? Because for the commodity, when you are going to do the negotiation, you need to check that what is the demand and supply into the market. What is the situation of the international market? कोल का इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कोल इंपोर्ट या कोल बाइंग के प्रोसेस को इंपैक्ट करते हैं. आपने वो सारी चीजें कहीं भी कंसिडर नहीं की. नेक्स्ट पार्ट इज विच इज वेरी जनरिक. X, Y, Z are three vendors. One vendor is giving you 30 days, one vendor is giving you the credit payment terms advance, and one vendor is giving you the credit terms of 60 days.
बट यू सेड कि भैया जिसने एडवांस में दिया ना उसने हमको 2 रुपए सस्ते में दिया। बट एज ए प्रोक्योरमेंट हेड आपको ये भी करना चाहिए था कि जिसने पैरिटी, यूज अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू द पैरिटी। इफ समवन इज गिविंग यू 30 days concept, then you factorize the entire payment terms by applying the interest rate, that yes, कि मेरा या तो आप इसको एडवांस के टर्म्स में लेके आओ या तो आप इसको क्रेडिट पीरियड के टर्म्स को इक्विवेलेंट करो, कि मेरे पास अब मेरा टेंटेटिव कॉस्ट क्या पड़ेगा। आपने वो कहीं नहीं करा। दैट्स द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रिस्क in a negotiation. You didn't identified even lot of vendors apart from these 3 vendors. Related party, you even don't take the declaration from the vendor that yes, there's a chance of the related party. वेंडर को तो पता है कि भैया हम यहाँ से हम अपने नाम से 2 कोड करवाएंगे डिफरेंट डिफरेंट नेम से। Nobody is going to ask. This is one of the major risks into the procurement process. Now the last thing is, आपने बोला कि मैं मटेरियल परचेज करूंगा चाइना से, और लेट्स टेक वन एग्जांपल, रसिया। बट द ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फैक्टर्स यू डिडंट कंसीडर। रशिया से इंडिया में मेरा मटेरियल कितने दिन में आएगा, आपने वो लीड पीरियड को कहीं कंसीडर नहीं करा। व्हाट आर द रेगुलेटरी नॉर्म्स, अभी रशिया में वॉर चल रहा है किसी कंट्री के साथ में, या उसके यहाँ पे अदर शशि नॉर्म्स क्या, वो सारी चीजें आपने कहीं कंसीडर नहीं करी। These are some of the major risks into the function of the procurement. And last part is on the quality which matters a lot. And मैं आपको बता दूं, lot of manufacturing organization में आपको क्वालिटी के ऊपर ढेर सारी इश्यूज मिलेंगे, जहां पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वेंडर के साथ में या क्वालिटी डिपार्टमेंट वेंडर के साथ में मिलकर कोलिशन करता है। Lot of things, lot of issues you will find that into the organization there's a lot of collusion with the vendors. 2 पार्टी मिल गया, आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट और वेंडर, तीनों मिलकर के इन्होंने बोला कि मेरे को एक्स ग्रेड का मटेरियल ही चाहिए, मेरे को वाई ग्रेड का चाहिए। अब मुझे वाई ग्रेड का चाहिए ना, तो पेपर पे तो लुक को दूंगा वाई ग्रेड, बट मेरा जो क्वालिटी सप्लाई कर क्वालिटी चेक करने वाला बंदा है उसको पता है कि भैया इस वेंडर का मटेरियल आने वाला है। व्हाट आई डू, I'll at the time of the receipt of the goods at the plant, what I'll do, I'll obtain the test certificate from the commercial department and then see that yes, we have performed internally the quality testing of that material and the quality is okay. But कल को परफॉर्मेंस में जब इसके पता चलेगा तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो क्वालिटी खराब थी। These are the major risks. And I'm telling you all these risks which I have faced in during my 7 years of career कि procurement में कैसे कैसे चीजें involved होती हैं। Yes, in terms of the control will come later on. That's a different part. So if you see, this is, we have already discussed that what are the component, what are the stages of the procurement process. Now the thing is, we discuss procurement planning. अब procurement planning करता कौन है? User department, the department who requires the material for the production of the finished goods or delivering of any of the services. They are the user department. And it is the duty of the user department to perform the planning. That yes, they need material on this particular day. ये तो बात होगी। एक बात आती है कि सर अगर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग यूजर डिपार्टमेंट का काम है तो प्रोक्योरमेंट का फंक्शन कहां से आता है? This could be your question. But now the thing is, let me tell you, once the requirement of user department is freezed and user department circulates the entire requirement to the procurement function, the entire function of the commercial department is started. अब commercial department क्या करेगा ना, या जो purchase department है, they will start identifying कि मुझे इस मटेरियल को इस डेट तक डिलीवर करना है।
उसके लिए वो they will start doing the backward calculation that मुझे कौन से वेंडर से जल्दी माल मिल सकता है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जिससे बेस्ट नेगोशिएशन कर सके, all these things. एंड प्लानिंग में भी अगेन एक चीज है कि कौन सा मटेरियल मुझे प्रायोरिटी है. सपोज यूजर डिपार्टमेंट ने आपको 20 मटेरियल्स की प्लानिंग दी कि मुझे ये सारे आइटम्स चाहिए, बट वेदर ऑल 20 मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? नो. 90% ऑफ टाइम नो, बट प्रॉब्ली फ्यू टाइम्स इट कैन बी यस. तो उस केस में आपको देखना है कि किस मटेरियल का प्रेफरेंस या अर्जेंसी सबसे ज्यादा है. So this is the case of the procurement planning. Now the part is vendor management. अब बात आती है vendor management. But before going to the vendor management, let me tell you, and this can be the question for anyone, कि सर procurement planning करते कैसे? As a user department, मुझे पता है कि भैया मेरे को इतना माल चाहिए, 20 दिन के बाद में मैं क्या करूंगा? I'll write an email. Suppose if your organization is not having any of the technology to perform the procurement planning, like in case of SAP, you can perform the procurement planning within the systems. But procurement planning में क्या क्या factors consider कर सकते हैं? So there are a lot of factors. First, what is the opening stock, or what is the stock available with you as on date? And now the second part, what is your requirement? And what is the third time? What is the lead time to buy that particular material? But in this particular, all these three factors, user department will consider that yes, this is my opening stock, this is my requirement, and this is the consumption. So to manufacture X number of the goods, yeah. Okay. Okay. Is it okay? Yeah, thanks. So now the thing is, which is very important, कि आपने procurement planning करें. And now there are two things. In your organization, the procurement planning can be the manual function. You will perform the entire planning into the Excel sheet. What is the risk? There's a lot of risk that you can do a manual error. Lot of risk that you can change that particular Excel sheet at any point of time. So there will not be a trail that when you did the changes and all. So if you want to build a strong mechanism, so you should, or control, robust control, you should implement the control within the system. Your system should be configured in such a way that whenever you are going to start performing material requirement planning. So मैं अगर बात करूं SAP में, into the SAP system, the procurement planning will do, the system will consider your opening stock, your requirement, and your consumption. And then they will say that yes, and the lead time. Considering all these factors, system will say that this is the requirement of particular raw material as on date. Now the second part is vendor management. Vendor management is a very important thing. Why? Identifying the vendor from the market is very important. And how, as a procurement head or how, as a sourcing person, how you will identify the vendor for that particular goods. You need to be updated with the market. Lot of connections, lot of resources. So you cannot dependent on the single vendor. That is, if you have a vendor directory of 20 vendors, that is sufficient. It is not possible that every time these 20 vendors are sufficient. Why? Because someone will be having an issue of financial, someone having an issue of the product quality, someone is not agreeing with your payment terms and all. So number of vendor development
for that particular material, more number of vendor development will reduce the dependency on particular vendor. अगर आप डिपेंडेंट हो तब क्या होगा उस केस में? मुझे पता है मार्केट में 3 वेंडर्स को पता है कि अगर इनको कॉपर परचेज करना है, या लेट्स टेक वन एग्जांपल, इनको कोई एक्स मटेरियल परचेज करना है, तो ये केवल हम 3 के पास में ही आएंगे. नाउ दे विल स्टार्ट प्लेइंग इनटू द रेट्स. दे विल नॉट do a better negotiation with you. Why? Because they know that company is dependent on us. This is one of the important. So for the vendor management, एक रिस्क ये भी हो सकता है. Yesterday I was discussing with someone, and the person was from the commercial team itself, and the organization was a large organization. They said at our organization where I was doing previously was into the commercial team, that particular fellow said वेंडर ऑनबोर्डिंग करने के लिए हमसे यहाँ पे लोग पैसे लेते हैं. See, I'm just telling you from the perspective of the risk, that how these things involve in terms of the risk, या collusions कैसे होते हैं, या fraud indicators कैसे होते हैं. क्यों? उसको पता था कि जब तक मैं अपने हार्ड कॉपी नहीं दूंगा, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन के हार्ड कॉपी नहीं दूंगा, ये जाकर के अपने यहाँ पे मुझे इम्पैनल नहीं करेंगे. एंड अगर मैंने कुछ दे दिया, देयर विल नो बी अ मेल ट्रेल एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इस केस में क्या होगा? वेंडर डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता. एंड सडनली ही टोल्ड दैट नाउ इन आवर केस ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड देयर ओन पोर्टल फॉर द वेंडर इम्पैनल. मतलब कोई भी वेंडर आ सकता है हमारे यहाँ पे, जिस मटेरियल को सप्लाई करेगा, दे विल प्रोबेबली टेंटेटिवली रजिस्टर देयर सेल्फ. एंड जो हमारी कॉमर्शियल टीम है ना, they will be having, and in that particular vendor portal there is 2 to 3 level of approvals. एंड हम वेंडर वहां पे अपने सारे केवाईसी अपलोड करता है, फाइनेंशियल्स अपलोड करता है, क्रेडेंशियल्स अपलोड करता है. एंड पोर्टल में ही एक वर्कफ्लो मैकेनिज्म बना हुआ है कि भैया वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के पास में जाएगा, तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट विल vouch each and every documents, verify each and every documents, and after that it will go to the legal, and then it will go to the master data management team, the final team. And once they will approve, the entire vendor code is created. Now you see there is a mail trail, there is a workflow mechanism. Everyone can identify that yes, कहाँ पे मेरा vendor onboarding का process रुका हुआ है. This is called as a vendor management. अगर the second part if I talk about, ये तो हो गया onboarding of the vendor. बट अगर मान लो वेंडर का ऑनबोर्डिंग हो गया, परफॉर्मेंस असेसमेंट भी उसको करना होगा आपको. यस, डिपेंड अपॉन द डिलीवरी of that particular, you can say, material, depend upon the cost negotiation, depend upon the quality, the company will perform the performance evaluation of that particular vendor. और अगर उस वेंडर का परफॉर्मेंस सही है, तो in that particular case, company will continue to do business with that particular vendor, or company will continue to award the business to that particular vendor. Otherwise, company will block that particular vendor. Assume करो कि अगर ये सारी चीजें आपकी मैनुअल होती, तब क्या होता? मैं क्वालिटी में भी इंटरवेंशन कर सकता था. मैं बोलता कि हाँ ठीक है, ऑन पेपर वेंडर ब्लैकलिस्ट हो गया, बट वो कहीं सिस्टम पे तो नहीं ना. सिस्टम इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू टू डू द ट्रांजैक्शंस. So these are some of the risk and control in case of the vendor management. Now the second part is requisition and purchasing. Procurement planning हो गया, vendor management. अब क्या होगा? आप मार्केट में क्या करोगे? Commercial department will float an inquiry. They will float an inquiry into the market for purchase of the goods. But why they will float?
योर क्वेश्चन कुड बी दैट वो इंक्वायरी फ्लोट करेंगे क्यों? सर आप मेरे को बताओ, अगर आप मार्केट में कोई चीज परचेज करते हो तो आप खुद जाकर के 10 दुकानदारों से पूछते हो या नहीं पूछते हो? क्यों? तो आपको पता तो चलता है ना कि भैया बेस्ट रेट मार्केट में क्या चल रहा है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। सो आप मार्केट में फ्लोट करते हो जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग वेंडर डेटाबेस है एंड आपके जो प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स है, एंड देन वेंडर विल सब्सिक्वेंटली रिवर्टिंग बैक विद देयर आरएफक्यू, विद देयर प्रपोजल्स, यू कैन से कि ठीक है हम आपकी कंपनी के साथ में बिजनेस करना चाह रहे हैं एंड दिस इज आवर रेट, दिस इज आवर क्रेडेंशियल्स, दिस इज आवर ईच एंड एवरीथिंग। And once you receive the proposal, what you will do? Commercial department will prepare a sheet for the technical evaluation. अब आप मेरे को बताओ, जब आप कोई चीज परचेज करते हो, मार्केट में जाते हो, सबसे पहले वही तो देखते हो ना कि भाई ये मटेरियल है कैसा, ये गुड्स है कैसा, ये सामान कैसा है। अगर वो सामान आपको अच्छा लगता है तो आप पूछते हो भैया इसका रेट बता दो। सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई। नाउ द क्वेश्चन कम कि सर ये तो आपने बोल दिया, प्रोसेस क्या होता है, रिस्क तो बता दो इसमें क्या है। लेट मी टेक यू वन एग्जांपल। देयर इज अ कंट्रोल, देयर इज अ बिजनेस जहां पे पूरा मैनुअल चलता है, और देयर इज अ बिजनेस जहां पे सारी चीजें ऑटोमेटेड चलती हैं। नाउ द थिंग इज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने क्या करा, मेल से सबको भेजा आरएफक्यू। आपके यहाँ पे 10 वेंडर है, आरएफक्यू भेजने का प्रोसेस है, आपने सबको ना रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेज दिया एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड मेल दैट वी वांट to buy this material, this quantity, this is the specification, please submit your offer latest by this particular day. अब आप सोचो, ऐसा तो नहीं है कि अगर 10 वेंडर को आपने कोटेशन भेजा तो 10 के 10 वेंडर रिस्पॉन्ड करेंगे। 10 के 10 वेंडर विद इन द सेम टाइम आपको कोटेशंस भेजेंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वेदर इट इज इजिली ट्रेसेबल फॉर एनी ऑफ द थर्ड पार्टी और फॉर द मैनेजमेंट दैट यस कब किसने किसने कोटेशंस दिए? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम्स इट कैन बी पॉसिबल, समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ देयर इज अ हाई चांसेस कि मेरे पास 5 लोगों के कोटेशन आ गए, मुझे पता था मुझे छठवें को तो देना ही है ऑर्डर। मैंने क्या करा, 6 एज अ कॉमर्शियल टीम और पर्सन wanted to do with a modified intention, wanted to do some malicious activity. Now what is the thing? Commercial department will think, they will call to 6th vendor कि भैया हम तुमको ऑर्डर देंगे, आप एक काम करो, मेरे पास ये 5 कोटेशन आए हैं, उनके रेट्स ये, आप एक काम करो, आप ये रेट दे दो। अगर ये एग्री हो गया, सो दिस इज अगेन कि जो सबसे लास्ट में दिया, एंड दिस इज द हैबिचुअल प्रैक्टिस कमर्शियल टीम इज फॉलो। तो आप एक ट्रेंड पता लगा सकते हो कि भाई ऐसा है कि इस पर्टिकुलर वेंडर को ही ऑर्डर बार बार क्यों जा रहा है, एंड यू हैव ट्रेस्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यू हैव सीन कि मतलब जो ये वेंडर सबसे लास्ट में कोटेशंस देता है और सबसे लास्ट में इसको ही ऑर्डर देता है, इसका मतलब कोई तो है ना जो प्राइस बताने वाला है। दिस इज वन ऑफ द रिस्क। बट अगर आपने ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी, आपने एक सिस्टम बना दिया कि नहीं, जो भी कोटेशन आएगा, आपने एक सिस्टम बना दिया, पोर्टल के थ्रू सबको आरएफक्यू जाएगा, जब रिप्लाई करेंगे तो वेंडर्स को अपने आरएफक्यू पोर्टल पे लॉग इन करके उस पर कोटेशन सबमिट करना है। अनदर थर्ड पार्ट इज, अब आप जब नेगोशिएशन करते हो ना, अब आपके पास में ट्रेसेबिलिटी है कि किसने कब कब कोटेशन दिया। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर अ शीट कि भैया अच्छा इसने ये कॉस्टिंग दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया है। नाउ द थिंग इज, इफ यू सी, आपके पास में पूरा मेल ट्रेल, एक मैकेनिज्म, आपके पूरा ट्रेल है कि किसने कब कोटेशन दिया, क्या उसका एक्चुअल कोटेशन था, कोटेशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसकी भी गारंटी आपके पास में। क्यों? बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल एंड इट कैन नॉट बी डिलीटेड।
from the front end. Now the thing which is very important here, that you can reduce this particular risk or negotiation risk by implementing the robust technology based control. The one thing which is very important, if you are doing the negotiation, you need to consider all the factors. And what are the things which is very important कि भाई मार्केट में रेट क्या चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई कैसा है मार्केट में, उसका डिटेल्ड कॉस्टिंग आप दें। अगर आप मुझे कोई मोटर देते हो, मोटर मुझे परचेस करनी है, तो मोटर में अगर मैं आपको 20,000 रुपए दे रहा हूँ, एक मोटर का प्राइस है, तो उसके पीछे क्या क्या कॉस्टिंग है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है। These are the things which is very important, I can say. Now the thing which is very important, material receipt, warehousing. अब आपने ऑर्डर कर दिया, सब कुछ हो गया, सामने वाले को परचेज ऑर्डर भी चला गया। अब बात आती है सर, परचेज ऑर्डर का नाम तो आप ले रहे हो, बट परचेज ऑर्डर होता क्या है? सर, इट इज नथिंग बट अ इंटरनल डॉक्यूमेंट. You can say that an agreement can be issued. You can enter into an agreement with the party. You can, but if it is not a consistent rate or rate is frequently changing, you will issue the purchase order. But there is again one more risk associated with the issuance of the purchase order. अब आपको लगा कि मुझे 5 करोड़ का मटेरियल खरीदना है, बट मैं एवरी टाइम अपने बॉस के पास में जाता हूँ ना, तो या मैं डीओए मैट्रिक्स को विजिट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, एवरी टाइम दिस परचेज ऑर्डर is going with the CFO for the approval as a final. तो मैं क्या करूंगा? I'll break all this particular POs. You can say that it is a split PO. I'll create one PO for 50 lakhs by today, 50 lakhs for tomorrow, 23 lakhs or 20 lakhs day after tomorrow. Why? To avoid the top management for giving them. आपको कोई क्वेश्चंस नहीं चाहिए. This is the reason. This is again one of the risks where you will bypass the entire release strategy. Now the thing is receiving and warehousing. Receiving is nothing but a material receipt. When you place the order with the vendor, you will get the material within the timeline. There's a lot of chances that there's a delay in the delivery and all. But what is the risk at this particular receiving stage? अब इस केस में ऐसा होगा, आपको मटेरियल चाहिए था 10 पीस, 10 क्वांटिटी, बट वेंडर हैज गिवन यू 9 quantity only. Invoicing is of 10 quantity, but physical quantity is 9 quantity. But there's a high chances of the short delivery of the goods. But yes, again, if the department functions are segregated, if the stores functions are not with the procurement function, तो उस केस में क्या होगा? जो आपका रिस्क होगा कि मटेरियल मुझे फिजिकली कम मिला. अगर वही कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ही जीआरएन बनाता हो, गुड्स रिसीट नो और एमआरएन मटेरियल रिसीट नो, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू विल डू? मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी 9 आई है, बट इनवॉइस क्वांटिटी 10. व्हाट आई से, मुझे पता है कि वेंडर इसमें से 10% देने वाला है. आई विल पास दैट पर्टिकुलर जीआरएन विद द 9 quantity. And I'll enter that yes, 10 quantity received. So this is again the risk where you make the excess payment, collusion with the vendor. But now the thing is, अगर डिपार्टमेंट के फंक्शन सेग्रीगेटेड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सेग्रीगेशन है, उस केस में क्या होगा? स्टोर्स विल पंच लाइन दैट इज मुझे एक्चुअल मटेरियल इतना रिसीव हुआ, फिजिकल 10 है, तो मैं शॉर्टेज क्वांटिटी आई विल डेबिट टू द वेंडर बाय 1 quantity. Now the last part into the receiving and warehousing, which is very important, quality inspection of the goods. See, lot of times you will find this is one of the gray area
you will find that lot of malicious activities being done by the quality. मैं सब क्वालिटी के वेंडर को फोन करता हूँ कि ठीक है तुम्हारा मटेरियल तो आ गया है एंड इसमें क्वालिटी में प्रॉब्लम है. अब बात आती है क्वालिटी को पता कैसे चला. हाउ द रिस्क अराइज एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. The thing which is very important, there's a test certificate for that particular material. Quality department will obtain the test certificate from the stores department and they will say कि हाँ मटेरियल सही है. इंस्पेक्शन करा नहीं, उसने मटेरियल भेज दिया. वेंडर को और क्वालिटी डिपार्टमेंट को पता है कि क्वालिटी टेस्टिंग नहीं होने वाली, उस पर क्वालिटी डिपार्टमेंट डायरेक्ट इंस्पेक्शन करता है. नाउ यू टेल अस कि क्या क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास में वेंडर का क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट जाना चाहिए? पर्सनली आई से नहीं. क्यों? अगर वेंडर का क्वालिटी का मटेरियल क्या है, अगर वो चीज प्रोक्योरमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले को पता चल गया डिलीवरी के टाइम पे, वेंडर के टेस्ट सर्टिफिकेट से पता चल गया, तो क्या वहां पे फ्रॉड इंडिकेटर्स नहीं है? क्या वहां पे फ्रॉड नहीं हो सकता? हो सकता है. सर इस केस में क्या होना चाहिए ना, द कंट्रोल व्हाट यू कैन बिल्ड, द कंट्रोल व्हाट यू कैन बिल्ड इज दैट यू कैन से क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास में टेस्ट सर्टिफिकेट जाना ही नहीं चाहिए पर्टिकुलर मटेरियल का. You build a control, you mention in your policy that quality test certificate will not be handed over to the quality department at time of inspection of the goods. मुझे पता है कि मेरी ये पेनिस की क्वालिटी है, मैं इसको टेस्ट करूंगा तो मुझे पता यही आने वाला, तो मैं क्या करूंगा? मैं नहीं करने वाला, मैं ऐसे डायरेक्ट पंचिंग कर दूंगा. This is one of the risks. So you segregate the responsibilities, duties and all. And last part is invoice processing and payments. So procurement to pay में अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है थ्री वे मैच. थ्री वे मैच मतलब तीन तरीकों से अगर आपने मैच कर दिया, इट मींस दैट योर एंटायर इनवॉइसिंग इज करेक्ट. जितना परचेज ऑर्डर आपने दिया था उतना ही मटेरियल रिसीव हुआ, उतने का क्वालिटी इंस्पेक्शन हुआ, एंड सिस्टम इज नॉट अलाउइंग टू पास द इनवॉइस बियॉन्ड द जीआरएल क्वालिटी. मतलब जितना मटेरियल क्वालिटी के थ्रू रिसीव हुआ है या जितना मटेरियल का जीआरएम बना उससे ज्यादा इनवॉइसिंग कर ही नहीं सकते. एंड इफ दैट कंट्रोल इज वेल इन प्लेस, देयर इज अ very minor chances that you can make the extra payment, or I can say there will be no chances. So these are the things, or you can say that risk which is involved at a procurement level. Next, go to the next slide. अब बात आता है कि typical procurement planning. See, before understanding the risk and control, we should understand also a little bit that what are the typical process within the procurement planning, within the vendor management, within the requisition, within the warehousing and all. So we have already discussed this particular point. That procurement planning we have already showed that कि हमने procurement plan क्या करा हुआ है, procurement budget क्या है, then what is the variance budget versus actual. Vendor management is again the vendor setup form. It can, if you have built up the technology control, base control, then your control is good. The robust control mechanism. The next part is vendor performance mechanism. Next part is purchase requisitioning and purchasing. Purchase requisition, which is, अब बात आती है कि सर purchase requisition क्या होता है? Purchase requisition is nothing but a requirement planning, a sheet or a requirement or internal document through which user department will raise the requirement of that particular material, and it will be into the workflow mechanism that yes, user department has raised the material requirement for X quantity at this particular date, and what is the status of it. RFP is request for quotation or request for proposal. Then उसके बाद vendors के quote आएंगे, then bid evaluation summary बनेगी. इसको हम लोग टेक्निकल कंपैरिजन शीट भी बोलते हैं, एंड उसके बाद जब टेक्निकल कंपैरिजन होता है तो हम लोग प्राइस कंपैरेटिव शीट भी बोलते हैं, PCS. नेक्स्ट वी विल इशू द परचेज ऑर्डर,
if it is a one time if the rates are changing. But if it is a case of fixed rate during the entire year, we will issue the rate agreement. And next part is authority matrix. Authority matrix is nothing but that lot of approval mechanism to ensure that the procurement functions are well in place, the procurements are valid and all. See, you can say that up to 10 lakh, department head, or you can say that supervisor of that particular group has the power to release the purchase order or approve the procurement. Commercial head is having the approval till 50 lakh, till 50 lakh रुपए तक वो अपनी जजमेंट के बेसिस पे कर सकता है. क्यों? आपको पावर को तो डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी ना. ऐसा तो नहीं सकता कि सारी चीजें सीएफओ के पास में जाए, सारी चीजें एमडी के पास में जाए. So that's the reason you have said authority matrix. Next part is receiving and warehousing. What's receipt note? We have already discussed that it is called as GRM. QC tag is basically called as why QC tag. कौन सा मटेरियल, जब आपके पास मटेरियल आएगा, अब आप मुझे प्रैक्टिकली बताओ, इज इट प्रैक्टिकल to test all the material within a short interval of time or within the same day? Ideally, no. So that's the reason there's a bin within the stores itself. That is, these are the material we have received. These are material which is pending for the quality inspection. एंड जैसे ही वो क्वालिटी इंस्पेक्शन से तो पता चलता है कि एक्चुअली मेरे पास कितना मटेरियल क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है. नेक्स्ट इन बिन कार्ड वही छोटा सा कार्ड होता है जहाँ पे हर एक रैक में लिखा होता है कि भैया ये इस पर्टिकुलर रैक में और बिन में ये मटेरियल रखा जाएगा. तो जब भी वो मटेरियल रखते हैं हम लोग तो वहां पे बिन कार्ड लगा देते हैं, सो दैट वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि हाँ ये कौन सा मटेरियल है. And next is inventory ledger. That is all about the stock report. Last part is invoice processing and payments. Again, we have said the three-way match, which is the very important concept. Invoicing, कि भाई वेंडर का इनवॉइस होना चाहिए, उसमें कहीं पे ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए, मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और ऑथराइज सिग्नेचर होना चाहिए. एंड फाइनली इज द पेमेंट प्रोसेसिंग. पेमेंट प्रोसेसिंग से मुझे याद आया, I just wanted to tell you one thing, that how the payment fraud can happen. See, earlier there was a lot of fraud when the technology was not in place. Vendor का अकाउंट नंबर एक्स है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट वेंडर मैंने क्या करा, वेंडर का अकाउंट नंबर चेंज कर दिया. बट आपको अभी वैसे फ्रॉड्स नहीं मिलेंगे. नाउ हाउ विल सी, you will see that this is the fraud indicator, or you can say that favoritism to the vendor, which is more appropriate. मुझे पता है कि इन सारे वेंडर्स को 30 दिन के अंदर पैसा देना है. There are vendors who are having the credit terms of 30 days. There are vendors who are having a credit terms of 45 days. There are vendors who are having payment terms of 15 days. What you did, you have hold the invoice of vendor having a payment terms of 15 days without any justification. But you are releasing the payment which is having a 30 days before the due date. And if the event is one time, you can say that yes, justifiable. But if it is a recurring event without any justification, then what you will see? You will definitely, you need to think from your mind that no, this is a case of, this is a proper case of vendor favoritism. अब आप क्या करोगे, वेंडर से तो आप ऐसे ही करोगे ना कोलिशन. पेमेंट वाला बोलेगा कि भाई मैं तेरे पेमेंट निकाल दूंगा, ड्यू डेट के पहले काम करना, मुझे ना जितना भी पेमेंट निकालूंगा हर पेमेंट में 0.1% मुझे देते जाना. Can that be possible? Very much. So this is again the thing is, we already discussed that what is PR, purchase acquisition, इसको हम इंडेंट भी बोलते हैं, PO. अब बात आती है कि PR. अब हम इसको फाइनेंशियली भी समझेंगे कि फाइनेंशियल क्या, परचेज एक्विजिशन एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है. I'll assume that, and I'll definitely assume that people will agree with me that purchase acquisition and purchase order both are not the financial document. इससे आपके फाइनेंशियल नंबर्स पे कहीं इंपैक्ट नहीं होने वाले. यस, आपके टोटल ओपन कमिटमेंट कितने पड़े ना, वो आपको जरूर एक एज अ कंटिजेंट आइटम होगा, बट आपके फाइनेंशियल नंबर्स में बॉटम लाइन टॉप लाइन में कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है.
GRM, yes, that is your financial document. Invoicing, again, that is the financial document. What is the BOM? Did you ever heard that that is the एंड इस केस में क्या होगा, उसको हम बोलते हैं BOM, बिल ऑफ मटेरियल. Now the thing is, let's go to the next part. Request for quotation we already discussed. MRP, material requirement planning. We were discussing material requirement planning. Already discussed that a mechanism which uses procurement and manufacturing lead times and stock level to manage the inventory. Annual rate contract, हमने अभी कई बार बात करें. आपने कोई मटेरियल या सर्विसेज लेना है जिसका रेट पूरे साल में फिक्स है, तो आप क्या करोगे? क्या उसको आप परचेज ऑर्डर इशू करते रहोगे? नहीं. मैं क्या करूंगा, वेंडर के साथ एक एग्रीमेंट इंटर कर लूंगा. मैं बोलूंगा कि वेंडर, मैं आपके साथ में एक एग्रीमेंट इंटर, तो दैट इज लीगली बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज. दिस इज द थिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ एनरोलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द प्रोबेबल फंक्शन की कैसे डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है. एंड आई डोंट थिंक सो कि यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स. दिस इज all depends, it all depend upon company to company. We have already discussed this thing, procurement planning. यहाँ पे I have tried to incorporate कि procurement planning function काम कैसे करता है. And then the subsequent slide I'll say that what are the risk. Procurement planning में directly तो नहीं बोलूंगा ना कि मुझे कितना मटेरियल चाहिए. If you are a manufacturing concern, how you will decide the procurement planning? And I'll say from the backward you need to do क्या, आपको कितना सेल्स करना है, उस सेल्स के बेसिस पे आपको प्रोक्योरमेंट प्लानिंग डिफाइन करनी है. दिस इज वेरी बैकवर्ड आपको करना है. फाइन, योर टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ ऑफ मे जून, यू कैन से वी आर गोइंग ahead with the month of June. June month the sales target is 20,000 ton of steel rod. And now this is, you are into the 15th of May. What you will do? आप अभी से प्लानिंग करना चालू करोगे कि 20,000 टन मुझे मैन्युफैक्चर करना है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. व्हाट और हाउ और व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द मटेरियल वी रिक्वायर्ड टू बाय. सो सबसे पहले सेल्स प्लानिंग होगी एंड उसके बाद है प्रोडक्शन प्लानिंग. प्रोडक्शन प्लानिंग क्यों होगी कि भैया 20,000 टन में एक दिन में मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा. मैं कुछ चीजें फर्स्ट वीक ऑफ जून में करूंगा, कुछ सेकंड में करूंगा, कुछ थर्ड में करूंगा, कुछ फोर्थ में करूंगा. Now the thing is, you will start planning for the material. कि अगर आपको सेल्स 20,000 टन में आपके पास ये 10 कैटेगरी ऑफ मटेरियल चाहिए, तो 10 कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसका है, सबसे पहले कौन सा मटेरियल चाहिए, फिर कौन सा चाहिए, फिर कौन सा चाहिए. दिस इज द बैकवर्ड. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल सी दिस इज द प्रोडक्शन प्लान बेस्ड ऑन दिस. एंड उसके बाद क्या होगा कि आपका लीड टाइम्स क्या है, कौन सा मटेरियल कितने दिन में. अब आप मेरे को बताओ, आपको जून में 20,000 टन बेचना है और एक ऐसा मटेरियल है जिसको आने में ही 60 दिन लगते हैं, उसके पहले आता ही नहीं है, तो क्या आप आज की डेट में बैठ करके जून मंथ की प्लानिंग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं. ये आपका एक वर्स्ट प्लानिंग मैकेनिज्म है. दिस इज कॉल्ड एज अ वर्स्ट प्लानिंग मैकेनिज्म. यहां पे एक सबसे बड़ा रिस्क है. एक आप सुने होंगे कभी से कि कंपनी हैज अ इनएडिक्वेट मटेरियल प्लानिंग मैकेनिज्म. ये यही मटेरियल, इसी की बात कर रहा हूं मैं. लीड टाइम आपको कंसिडर तो करना ही पड़ेगा. सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 60 नहीं, आपको 70-80 दिन पहले ही आपको प्लानिंग करनी है कि भाई मुझे अगर 60th डे मटेरियल चाहिए तो मुझे ये मटेरियल की प्लानिंग कितने दिन पहले से चालू करनी है. देन इट इज योर बॉम और हिस्टोरिकल कंजम्पशन लेवल. आई हैव ऑलरेडी सेड कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, फिर आपके पास में कितना ऑलरेडी ऑर्डर पाइपलाइन में पड़ा हुआ, वो सारी चीजें कंसिडर करोगे.
देन उसके बाद ये पूरे प्लान को मटेरियल हेड प्रोक्योरमेंट हेड अप्रूव करेगा, एंड इफ देयर इज एनी चेंजेस दे विल चेंज, and against this planning the entire procurement function will work and they will start buying from the vendor. Now this is, I have tried to map here the illustrative risk. What are the risks? That no rationale or for linkages of the production plan. आपने बोला, मैं आपको जैसे एग्जांपल में पहले बताता, आपने बोला मुझे भैया 20 टन के लिए मुझे 500 मुझे 20 टन मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टील, मुझे 1000 टन ऑफ आयरन ओर चाहिए, मुझे 500 टन कोयला चाहिए. But what is the basis to arrive at the number of 1,500 for the iron and coal? It means if you have not considered the factors like opening stock, your orders are already in hand, lead time. It means that this is one of the major risks into the procurement planning. So control what you can build, that companies should form up procedures or for the procurement planning. And that procurement plan should be reviewed on a timely basis. And there should be a periodic reviews to check the revision of the procurement plan. Suppose अभी आपको लगता है कि मैंने procurement planning करके vendor को सब कुछ order दे दिया, but there is a certain case where you will identify that particular vendor is not able to supply the material within the time. Then what you will do? You will, if you are not having the control to search the another vendor who can supply the material within the time, then this is again the failure of the procurement planning. That's the reason we are saying कि आपको procurement planning में आपको timely visit करना चाहिए. और अगर आपको लगता है कि भैया मुझे लग रहा है कि मैंने जो प्लानिंग करी उसमें मटेरियल ज्यादा आ रहा है, तो मुझे उसके लिए क्या डिसीजन लेना है. The second case is if vendor is not able to supply the material within the time as per the agreed procurement planning, then we as a commercial head we need to identify some other vendor who can supply the material within the right time. These things we are saying that you can build a best control. And next part is budget. अगेन वही चीज है, आपको 100 रुपए का बजट मिला, अगर आप वो मटेरियल 120 में खरीद रहे हैं, irrespective of the quality and lead time, तो how it is going to serve this. और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था procurement is acquisition of the goods and services at the best possible cost at the right time with the best quality of the goods. So these are some of the gaps in control. The next is, अगर आप देखोगे, inaccurate or incomplete projections in the procurement plan. And the control is procurement plan is reviewed and approved by the designated authority, and periodic reviews of the procurement plan to analyze actual versus planned purchase. We already discussed all these things. Procurement planning not utilized for making purchase. What it means. And the control you can build, that checking of PR and PO against the procurement plan prior to approval. अगर आपने ऑलरेडी कुछ ऑर्डर्स आपने इशू कर रखे हैं, अब पता चला कि वेंडर ने जो है ना फर्स्ट में को एक रिक्वेजिशन रेज करा, उसको लग रहा है कि नहीं यार ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट इस रिक्वेशन को भूल गया, वापस से उसने 10 मई को चालू कर दिया, एक वापस से उसने 10 मई को दे हैव रेज्ड वन यू कैन से रिक्वेजिशन कि मुझे ये मटेरियल चाहिए. एंड एज अ प्रोक्योरमेंट पर्सन अगर आप ये नहीं देखोगे कि मेरा ऑलरेडी ओपन परचेज ऑर्डर कितने हैं, ऑलरेडी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ऑलरेडी ओपन परचेज रिक्वेजिशन कितने पड़े हैं, it means that you are not effectively doing the procurement planning. So you should consider all these factors while doing the procurement planning. And these things will lead to the emergency purchase. आपने काफी टाइम सुना होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में कि भैया हमने इमरजेंसी परचेज कर लिया, एंड दैट इज द ट्रेंड. इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे यहाँ कोई प्लानिंग ही नहीं है, एवरी टाइम यू डू अ इमरजेंसी परचेज. This always shows the indication that there is again one of the fraud indicator. Procurement head तो चाहता ही नहीं है कि मैं टाइम पे माल लेकर के हूं. They will raise n number of excuses. And procurement head sometimes अगर मान लो assume करो कि वो यूजर डिपार्टमेंट के साथ मिला, उसको पता है कि यार ये मटेरियल तो मेरे को खाली यही 2 वेंडर से मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इमरजेंसी परचेज करूंगा.
मैं रिक्वायरमेंट ही सबसे लेट में रेस करूंगा। मैं रिक्वायरमेंट रेट में रेस करूंगा तो आरएफक्यू भी लेट में होगा। फिर क्या होगा, रश रश में मुझे इमरजेंसी परचेज करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू आर डूइंग द इमरजेंसी परचेज, आप मेरे को बताओ आपका नेगोशिएशन पावर होती है? बिल्कुल नहीं होती है सर। सर आई एम गिविंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हियर। आप अगर मार्केट में जाओ एंड इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम, आर वी एबल टू नेगोशिएट विद द वेंडर्स? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, हम 2-4 मिनट 5 मिनट बात करते हैं, और हम वेंडर ने अगर रेट कम करा तो ठीक है, नहीं कम करा तो उस रेट पे हम मटेरियल लेकर के चले आते हैं। बट अगर ये चीज आप प्लानिंग करके जाते हो, आपके पास एक एनफ टाइम है, 1 hour 2 hour यू फॉर हैविंग अ टाइम इन द ओपन मार्केट, आप क्या करते हो, आप वेंडर से बार्गेनिंग करते हो, नॉट ऑफ वेंडर्स आप सर्च करते हो। इसको हम बोलते हैं ineffective procurement plan. That's the reason you should avoid emergency purchases. Sir, this is some of the thing which I have said ki how to draft if you ever find out these type of issues, how you can draft in your audit. Sir, next process is vendor selection and empanelment process. सर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग होगी। अब क्या होगा ना, अब आपके यहाँ पे वेंडर भी होंगे। सर देयर माइट बी द केसेस that you have enough number of vendors, but there might be the cases जहां पे आपके पास vendors नहीं होंगे। अब आप क्या करोगे, आपके पास enough time है, you will identify, start searching the vendors into the market कि हमको ये गुड्स, हमारी कंपनी ये मटेरियल परचेज या ये सर्विसेज लेना चाहती है, जो भी वेंडर इसके लिए इंटरेस्टेड हो वो क्या करे, अपना वेंडर इंपैनलमेंट कराए। सो आपने एडवर्टाइजमेंट किया, उसके वेंडर आए, वेंडर ने क्या करा, अपना रिस्पॉन्स करा, फिर वो कॉमर्शियल हेड या प्रोक्योरमेंट कमेटी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। वेंडर ने इसको, प्रोक्योरमेंट कमेटी ने इसका सारे क्रेडेंशियल्स देखे, सब कुछ देखा, फिर अप्रूव कर दिया। एंड वेंडर जैसे ही अप्रूव होता है कि ठीक है, अब क्या होगा, वो क्या करेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे लॉगिन करके रजिस्टर करेगा, एंड उसके बाद वेंडर ऑन हो जाएगा। एंड देन अगेन द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन व्हिच ऑलरेडी आई हैव। So types of tender, I'm not going to tell you all these things, but just because ये मैं आपको जस्ट एक दो ही चीज बोलूंगा जो इंडस्ट्री में इस समय चल रहा है। सर एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स बिडिंग का, अगर आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। सर रिवर्स बिडिंग में क्या होता है ना, द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेंडर ने आपको कोटेशन दे दिया, नाउ यू हैव योर ओन नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी, आपने खुद की उनकी कॉस्टिंग निकाली। अब आप क्या करोगे, वेंडर को एक कॉस्ट दोगे, if any vendor is going to meet my this particular price, counter offer जिसको बोलते हैं, अगर वो उसको मीट करेगा तो हम उसको ऑफर देंगे। आपने बोला कि वेंडर ने, सबने क्या करा, किसी ने 100 दिया, किसी ने 200 दिया, किसी ने 120 दिया, 140, आपने बोला कि मेरा जो प्राइस है वो 95 रुपीज का है। वेंडर विल स्टार्ट बिडिंग इफ यू आर हैविंग ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, तो वो क्या करेंगे, रिवर्स बिडिंग। आपने बोल दिया 95, अब आपके प्राइस के नियर बाई जो पहुंचेगा आप उसको ऑर्डर देंगे, और इसी को हम काउंटर ऑफर भी बोलते हैं। मैं वेंडर को बोलता हूँ कि नहीं ठीक है, हमारा रिवर्स बिडिंग नहीं है, तो क्या हुआ, मैं क्या करूंगा, 95, मैं उसको बोलूंगा काम हो तुम 95 में दे सकते हो क्या हमें, वो बोलेगा नहीं सर मैं आपको 100 से नीचे ले दूंगा। तो अगर आपने देखा इस केस में क्या हो सकता है, समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपका काउंटर ऑफर गलत भी हो सकता है, तो आप बोलोगे ठीक है मेरे को 95 नहीं मिला, बट 97 में तो मैं कर ही सकता हूँ। बट द थिंग इज, रिवर्स बिडिंग आज की डेट में काफी कॉमन है विद इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इन द प्रोक्योरमेंट फंक्शन, यू कैन से। सर नाउ द थिंग इज, what is the risk into the vendor management? सर सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट वेंडर्स। सर कंपनी के पास में ना कोई पॉलिसी ही नहीं है, कि कंपनी के पास में कोई पॉलिसी नहीं है कि फॉर ए क्लास ऑफ मटेरियल, फॉर हाई वैल्यू ऑफ मटेरियल, फॉर बी क्लास ऑफ मटेरियल और सर्विसेज, these are the guidelines which everyone should follow while onboarding any of the vendor. तो मेरा मन करेगा मैं एक्स बंदा, कॉमर्शियल टीम में 4 लोग हैं, तो एक वेंडर
एक बंदा अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करेगा, एक टीम मेंबर दूसरा थॉट प्रोसेस अप्लाई करेगा, एक टीम मेंबर तीसरा थॉट प्रोसेस अप्लाई करेगा। बट नाउ द थिंग इज, अगर हमको कंट्रोल बिल्ड करना है तो वी शुड डिफाइन अ गाइडलाइंस इनटू द इंडस्ट्री और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट यस, अगर आपको वेंडर को ऑनबोर्ड करना है ना, उस केस में आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी। नाउ द सेकंड थिंग इज, देयर इज नो मेकर चेकर मैकेनिज्म। उसका कोई इवेल्युएशन होता ही नहीं है। जो भी उसने डॉक्यूमेंट सबमिट करा, जो भी क्रेडेंशियल सबमिट करा, टेक्निकल प्रपोजल चेक करने वाला कोई नहीं, वेरिफिकेशन करने वाला कोई नहीं। वेंडर ने आया, वेंडर ने डायरेक्टली अपलोड कर दिया, सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट एंड दैट वेंडर इज ऑन बोर्ड। इट मींस दैट जो वेंडर जो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है उसको भी आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आप दिखा रहे हो कि मैंने तो कितने नंबर ऑफ वेंडर ऑनबोर्ड करे। नो, onboarding a appropriate vendor, onboarding an appropriate vendor should be the task, should be the KPI of the commercial department rather than onboarding of the vendor। मतलब वेंडर जो सर्विसेज या मटेरियल सप्लाई कर ही नहीं रहा है, उस केस में आप उसको ऑनबोर्ड कैसे कर सकते हो? आपके पास में डेटाबेस में होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपने इन अप्रोप्रिएट वेंडर को ऑनबोर्ड करा। सो दीज आर फ्यू ऑफ द रिस्क इनटू द वेंडर मैनेजमेंट। डिपेंडेंसी ऑन द सिंगल सोर्स वेंडर। सर आप मटेरियल परचेज कर रहे हो और उसके लिए एक या दो वेंडर के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, और आप बोलते हो मार्केट में तो बस इसके अलावा कोई दूसरा वेंडर है ही नहीं है। क्यों? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, एक्सेप्ट द मटेरियल विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पेटेंटेड राइट्स और OEM, उस केस को छोड़ करके ऐसा तो नहीं कि आपको मटेरियल नंबर ऑफ वेंडर्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। बट अगर कमर्शियल डिपार्टमेंट वेंडर आइडेंटिफाई नहीं करता है, सिंगल सोर्स पे ही डिपेंडेंट है, इसका मतलब वो वेंडर के साथ में फेवरेटिज्म कर, हायर कॉस्ट पे परचेज कर रहा है। सी, अगर मुझे पता है कि समवन इज डिपेंडेंट ऑन मी टू अवेल माय सर्विसेज, इफ एनी ऑफ द कंसल्टेंसी, इसका मैं तो क्या करूंगा, मैं एक्स की बजाय उससे X+100 चार्ज कर सकता हूं। सो दीज आर सम ऑफ द गैप्स। सो देयर शुड बी अ कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, and if you're buying from the single source vendor, there should be a proper justification कि भैया अगर मैं इससे परचेज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज, पीरियोडिकल बेसिस पे आपको वेंडर के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। You have 50 vendors, but 10 vendors are there who are supplying the inappropriate or inadequate quality of the material. The delivery services are very poor, but there is no mechanism within the organization to perform the vendor performance evaluation. In this case, what you will do? This is one of the risks. So if you want to build the control, you should implement the procedures or policies where you will see that for the A category of the material, each and every vendor will be audited or performance evaluation will be done once in a 6 month। इससे क्या होगा कि वेंडर के मन में भी एक डर होगा कि अगर मैंने सही सर्विसेज नहीं दी, सही क्वालिटी ऑफ मटेरियल नहीं दिया, उस केस में क्या होगा, मेरा बिजनेस बंद हो सकता है। Next is authorized list of impaneled vendors is not maintained. See, if you have a manual mechanism, then there's a risk. अगर but आपके पास में idly होता क्या है? In the organization, you will see that a lot of organizations, they have the best practices that for these category of material, these are my approved or preferable vendors. But apart from that, we are also having some other vendors. But अगर purchase करना है तो मैं इन्हीं 5 या 10 से purchase करूँगा। क्यों? Because they are the best in their quality, they are best in their cost, they are best in their services. So this is some of the best practices. Non-performing vendors continue to exist on the empanelment list of the vendors. मैं अभी डिस्कस कर ही रहा था आपसे कि अगर वेंडर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आप नहीं कर रहे हो और आप 50 वेंडर में से आपके पास 10 वेंडर ऐसे हैं जो हैबिचुअल डिफॉल्टर है, तो उनको भी पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, मुझे ब्लैकलिस्ट तो कोई करेगा नहीं, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। सो दीज आर द थिंग्स। कंट्रोल क्या होगा, कंपनी शुड डिफाइन अ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स and criteria for the periodic performance.
And the next part is responsibility for removing vendors not meeting the desired performance, जिसको हम लोग बोलते हैं black listing of the vendors. Empanelment, a list of vendors is reviewed and signed off by the authorized personnel. And last is an independent review of vendor list is performed for ensuring non-performing vendors are blocked for further order. सी आपने ब्लॉक कर दिया, एक सिस्टम में आपने मैकेनिज्म डाल दिया कि भैया इस वेंडर के साथ में मुझे काम नहीं करना है. Now, whether you will be into the system or out of the system, nobody can place the order because your system will never allow. और अगर उसको ब्लैक लिस्टिंग से हटाना है तो उस केस में क्या होगा? There should be a mechanism that if procurement team or the team who is responsible for the vendor management, they want to remove the blacklisting from a vendor, they should follow the process that there is a proper justification supported by the approval of the head and approval of the finance. And this is again what I have said, that is, if you are into the IA practices and if you are ever identifying, these are some of the standard wordings which I have tried to inculcate into this particular slide for your easy reference. See, but कोई मेरे से ये भी पूछ सकता है क्या ये स्टैंडर्ड है? बिल्कुल नहीं. Every time your risk, your root cause will be different. Root cause आपके fact and circumstances पर डिपेंड होते हैं यार. तो ये चीजें हैं जो मैंने इनकॉर्पोरेट करा है. इट इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बट ऐसा नहीं कि ये चीजें स्टैंडर्ड है. दिस कैन बी मैनुअल, दिस कैन बी डिपेंडेंट अपॉन पर्सन टू पर्सन. This is again the you can say that what is the audit trail and all, vendor कैसे onboard होता है. This is again the process flow. Now the thing is, which is very important, which I forgot to mention here, कि vendor master. अब मैं आपसे एग्जांपल बोलता हूँ, एक सबसे बड़ा रिस्क, and even I was in the last year. So we have identified the cases where the person who is responsible for creation of the vendor master is also having the access to change the vendor master and booking of the invoices and as payment authorization. अब आप मुझे बताओ कि अगर गौरव मिश्रा के पास वेंडर को ऑनबोर्ड करने का भी राइट है, वेंडर मास्टर में अगर कोई डिटेल्स, क्रिटिकल डिटेल्स लाइक बैंक अकाउंट डिटेल्स, आईएफएससी कोड एंड ऑल, अगर ये चेंज करने का राइट है, और मैं ही एक ऐसा बंदा हूं जो किसी वेंडर को पेमेंट भी कर सकता हूं एंड उसका इनवॉइसेस भी बुक करने का राइट, will you not feel or are you not seeing that there is a big gap here? No, there's a big gap. अब आप मुझे बताओ, अगर ये सारी चीजों का राइट मेरे पास में होगा उस समय क्या होगा? मतलब मेरा तो मन करेगा कि इस वेंडर के साथ में मुझे लड़ाई हो गई, अब मुझे इसके साथ काम नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा? उस वेंडर का बैंक अकाउंट डिटेल चेंज कर दूंगा, उसमें मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल. So ideally what the control should be, the person who is responsible for making the payment and making the invoice, they should not have access to create, onboard and amend the vendor master and vice versa. जिनके पास क्रिएशन का राइट है उनके पास में डिटेल को अमेंड करने का राइट नहीं होना चाहिए, उनके पास पेमेंट करने का राइट नहीं होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा हो सकता है. बट इफ देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट दैट शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड कि अगर बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करना है तो इन दैट पर्टिकुलर केस देयर शुड बी अ मेल कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूजर टू कमर्शियल डिपार्टमेंट एंड देन कमर्शियल डिपार्टमेंट टू सम अदर डिपार्टमेंट. बट देयर शुड बी अ segregation of duties between these two persons. So ये चीजें एक होनी चाहिए. And the last part is there should be a periodic mechanism, review mechanism कि भैया मेरे वेंडर मास्टर में, मेरे वेंडर के डेटाबेस में क्या क्या चेंज हुआ है, सो दैट आपको ये तो पता चले ना कि पूरे साल में जो भी चेंज हो सकता है, उसमें कुछ एड्रेस का चेंज हुआ होगा, कुछ ईमेल आईडी का चेंज हुआ होगा, कुछ मोबाइल नंबर का चेंज हुआ होगा, बट देयर विल बी अ केसेस जहां पे बैंक अकाउंट डिटेल भी चेंज हुआ. इट इज जस्ट टू गिव यू एन अश्योरेंस कि ठीक है, मेरे वेंडर मास्टर में जो भी चेंजेस हुआ है वो चेंज जेन्युइन है. सो दीज आर द थिंग्स एज अ टर्म्स ऑफ द गैप एंड डुप्लीकेट वेंडर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर एक ही वेंडर को आपने दो नाम से ऑनबोर्ड कर लिया है तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपने एक वेंडर के कोड में आप इनवॉइसिंग बुक कर रहे हो बट पेमेंट किसी और वेंडर में कर रहे हो,
फिर सडनली दिख रहा है कि अरे इस पर्टिकुलर वेंडर में तो हमने पेमेंट कराई नहीं है। Inactive vendors or non-impaneled vendor exist in the system. So there should be a control that if the vendor, there should be a periodical review mechanism, or you can say that annual or twice, once in 2 years and all. Depend upon the company. अगर inactive vendor है, they should be blocked. मतलब उसमें कोई धंधा नहीं हो रहा तो उसके बेस में कोई भी उसके रूल्स ओपन नहीं होने चाहिए. Again, your vendor master, there's a inaccurate or incomplete information. See, if you have onboarded the vendor, वेंडर की मेल आईडी अपडेट नहीं है, कल को आपको अकाउंट रिकंसिलिएशन करना है, तो आप वेंडर को कैसे इंटीमेशन दोगे कि भैया ये मेरा लेजर है, आप कंफर्म करो कि आपके अकाउंट में इतना ही बैलेंस दिख रहा है. एड्रेस इज नॉट अपडेटेड, देन हाउ यू विल सेंड एनी कम्युनिकेशन टू द कंपनीज रजिस्टर्ड एड्रेस. So when these are the gaps, and if you really want to build the control, robust control to mitigate this particular risk, your vendor master should be updated. Segregation of duties we already read. Authorized access to the vendor we already discussed. These things we already discussed. Next is requisition. Requisition and purchasing. XYZ डिपार्टमेंट, इनको रिक्वायरमेंट है, ये हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट है. स्टोर्स डिपार्टमेंट बताएगा कि भैया मेरा कन्वेंट्री करंट इन्वेंट्री का लेवल ये है. रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे यूजर डिपार्टमेंट अपने रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगा बाय असेसिंग द करंट इन्वेंट्री लेवल. दे विल रेज द परचेज रिक्वेजिशन. जैसे परचेज रिक्वेजिशन होगा वो अप्रूवल अथॉरिटी के पास में आएगा, उसने अप्रूव कर दिया, अब ये कॉमर्शियल हेड के पास में आएगा. नाउ एक्टिविटी ऑफ द कॉमर्शियल डिपार्टमेंट विल हैपन. So in terms of the risk, we already discussed, but let's see what I have written something. If I have written something different here, no. PR not prepared in the standardized form. See, I'll not say that this is one of the major risks, but this can be one of the improvement area. See, in the purchase requisition, if you have just mentioned that I want the material, I want X material, and on this date, and this is the quantity. And if you have not mentioned, example, let's take one example. आपको अपने प्लांट में सारे स्ट्रीट लाइट आपको इंस्टॉल करनी है. आपने बोला कि स्ट्रीट लाइट 100 नंबर्स आपको चाहिए. अब आप मेरे को बताओ, कल को यूजर डिपार्टमेंट ये भी तो बोल सकता है ना कि भाई मेरा बजाज का चाहिए था, लेकिन आप जो है ना फिलिप्स का लेकर के आ गए, मुझे बजाज का चाहिए. Whether the requirement in the PR itself was clear? No, it was not clear. So sometimes industry is having the process of issuing the PR, sometimes they are not. बट मैं बोलता हूँ कि चाहे वो प्रोसेस हो या नहीं हो, बट मटेरियल रिक्वायरमेंट जब आप रेस करते हो आइदर इनटू द सिस्टम और मैनुअली थ्रू द मेल कम्युनिकेशन टू द कमर्शियल डिपार्टमेंट, योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर. अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है ना, इट विल क्रिएट एन इशू. So in this particular case, your requirement should specifically say that you want this particular material of this quantity of this specification. And this is the control what we have mentioned here. Next is lack of budgetary control over PR. ये तो हो गया पूरा गड़बड़ मामला. गड़बड़ मामला क्या है? मुझे पता है कि मेरे पास कोई बजट ही नहीं है, मैं बजट के हिसाब से काम ही नहीं करूंगा. यूजर डिपार्टमेंट से PR को यूजर डिपार्टमेंट ही रेज करता है ना. In this particular case, there is a high chances of the risk that user can raise the requirement for the material which is really not required. And if you have a system control well in place, where PR is governed by the budgetary system, मतलब मैं उस बजट से ज्यादा PR रेस कर ही नहीं सकता हूँ. So in this case, आपका जो हायर रिक्वायरमेंट है, जो अननेसेसरी रिक्वायरमेंट है, उससे आप बच सकते हो, ओवररन से आप बच सकते हो.
This is again, the PR is not approved as per schedule of authority या approval matrix. So there should be approval mechanism जहां पे ये होना चाहिए कि भैया जब तक उस फाइनल अथॉरिटी का अप्रूवल या एज पर अप्रूवल मैट्रिक्स अप्रूव नहीं हुआ है तो इन दैट केस कोई भी प्रोक्योरमेंट का फंक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता है. PR not according to requirement, we already discussed this particular thing. Now, incomplete PR, we have already discussed that अगर specification mention नहीं है, कौन से डेट पे आपको requirement exactly चाहिए, ठीक है, तो उस केस में और ये सारी चीजें आती है. सर कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं PR में ना कुछ भी चीजें लिख सकता हूँ. सर अगर आपका PR में जो मटेरियल है और मटेरियल मास्टर में चीजें सही से अपडेटेड नहीं है, बट विद इन द PR जब आप रेस करते हो उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं कि आपको कौन सी कैटेगरी का मटेरियल चाहिए. So in this particular case, there's a huge chances of the incorrect procurement. Sir, next point हम आते हैं. RFQ, this is again the process flow. So I think we already discussed this in purchase requisition आया. Procurement का function start हो गया. And then RFQ फ्लोट करा, वेंडर आया, वेंडर ने अपने कोटेशन दिया, प्रोक्योरमेंट कमेटी के पास में गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना, टेक्निकली अप्रूव होने के बाद में आइदर परचेज ऑर्डर इशू होगा या तो एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट इशू होंगे. सर RFQ यूनिफॉर्म नहीं है, एक सबसे बड़ा रिस्क है. जब आप जैसे ही यूजर डिपार्टमेंट आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं करता है, अगर एज अ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट आपने अपनी रिक्वायरमेंट को आपने वेंडर्स के साथ में क्लियर नहीं करा, तो सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा? सर सबसे बड़ा रिस्क ये होगा कि हर एक वेंडर अपने अकॉर्डिंग से अपना कोटेशन भेजेगा कि ठीक है मैं ये मटेरियल इस ब्रांड का दे रहा हूँ, इसमें मेरा पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग अलग चार्जेस है, इंश्योरेंस का चार्जेस अलग है. जबकि आइडियली होना क्या चाहिए, जब आप RFQ सेंड कर रहे हो तो आपको लिखना चाहिए कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए और इतने इस डेट में मुझे चाहिए, इस और ये मैक्सिमम डेट होगी कोटेशन सबमिट करने की. अगर ये सारी चीजें नहीं है तो देयर इज अ ह्यूज गैप एंड रिस्क दैट आप प्रोक्योरमेंट सही से नहीं कर पाओगे. कोटेशन कंपैरिजन नॉट डॉक्यूमेंटेड. सर अगेन द थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ना तो कोई बीडी वैल्यूएशन समरी बनाई है ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट, 3 कोटेशन आ गए, कोटेशन के ऊपर आपने लिख दिया दिस वेंडर इज फाइनल. How someone will see after 6 months that whether the procurement done is right or not? PO does not include the standard terms and conditions. So it is again the general terms and conditions. It forms part of the agreement. It forms part of the PO also. कि अगर आप डिलीवरी में डिले करते हो तो हम कितनी पेनाल्टी लगाएंगे. What is the code of conduct? That code of conduct policy issued by the company you need to follow. तो ये सारी चीजें जो है ना वो रिक्विजिशन एंड परचेजिंग के लेवल पे आती है. सर अनऑथोराइज परचेज एंड डिले परचेज, वेरी सिंपल. सर हमने अभी तक PR में भी अप्रूवल मैकेनिज्म की बात करी, वेंडर में भी बात करी, यहाँ पे भी सर हम बात कर रहे हैं. अगर आपके पास में कंपनी में कोई अप्रूवल मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई पॉलिसी ही नहीं है कि X लेवल तक जो भी प्रोक्योरमेंट होगा वो मेरा X बंदा अप्रूव करेगा, X टू X1 तक गया तो मेरा कॉमर्शियल हेड अप्रूव करेगा, और अब X1 गया तो मुझे फाइनेंस हेड के भी अप्रूवल की जरूरत है. If there is no maker checker mechanism, then how you are going to be responsible for someone? Sir, there are two terms. एक होता है मेरा responsible, एक होता है मेरा accountable. सर ये दोनों सबसे चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. एंड नाउ द डिलेड परचेज. सर डिलेड परचेज अगेन, आपको मटेरियल चाहिए था मई के मंथ में, जून के मंथ में, और आप मई में बैठ के प्लानिंग कर रहे हो. एंड सर द नेक्स्ट पार्ट इज आपको करनी प्लानिंग कब चाहिए थी, आपको सर अप्रैल में करनी चाहिए थी. वेंडर डिले में दे रहा है मटेरियल, वेंडर इज डिलेइंग इन डिलीवरी ऑफ द मटेरियल फॉर विच देयर इज नो प्रोसेस टू ट्रैक द डिले इन डिलीवरी. अब आप बताओ, जब आपके पास ये प्रोसेस है ही नहीं है, आपको यही नहीं पता चल रहा कि वेंडर कब डिलीवरी करने वाला है या उसका माल कहाँ तक पहुंचा, देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑल्सो. सो उस केस में क्या होगा, आपके प्रोडक्शन भी हैम्पर हो सकते हैं. सो कंट्रोल शुड बी देयर, दैट आइदर द टेक्नोलॉजी कंट्रोल शुड बी देयर, दैट योर पोर्टल शुड इटसेल्फ रिफ्लेक्ट दैट व्हाट इज द स्टेटस, or there should be a periodical review mechanism. If there is a delay, then what is the reason for delay in dispatch of the material? सर एक्सेस परचेज हमने पहले ही बात कर लिया. प्रोक्योरमेंट प्लानिंग आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपके ये सारे इंपैक्ट आने ही वाले हैं. सर दिस इज ऑन द रिसीविंग एंड वेयर हाउस. सर ये सिंपल सा फंडा है, सब कुछ हो गया,
ट्रक आती है मटेरियल लेकर के, गोडाउन पहुंचती है, गोडाउन के पास में गेट पास इशू होता है। यहाँ पे सर अगेन एक आपके पास में फ्रॉड मैकेनिज्म हो सकता है कि सिक्योरिटी वाला वेंडर से मिला हुआ है, तो जितनी क्वालिटी का मटेरियल नहीं है उसके बाद भी बोलता गेट एंट्री करके कि ठीक है मटेरियल आप गाड़ी अंदर लेके जाओ। सर ये टैली शीट इट इज नथिंग बट मेरा परचेज ऑर्डर में जितनी क्वांटिटी उतना, दिस इज जीआरएन। सर यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क है कि फिजिकल मटेरियल मेरा 8 है लेकिन इनवॉइस में 10 है, एंड मेरा ये स्टोर्स वाला जो कंपनी वेंडर के साथ में मिला हुआ है, इसने जीआरएन बना दिया 10 का। अब फाइनेंस वाला तो देखने नहीं आएगा ना कि मेरे पास कितना मटेरियल आया हुआ है। अब इस केस में क्या होगा, वेंडर को एक्स्ट्रा पेमेंट चला जाएगा और थोड़ा सा पैसा जो हमारे स्टोर्स वाले को जाएगा, और स्टोर्स वाले बेचारे हमारे उसी 1% में खुश हो जाएंगे। सर ये सबसे बड़ा रिस्क है। सर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या पीओ रेज करने के बाद में आपके अकाउंटिंग में कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं सर, कभी नहीं आने वाला है। आपका इन्वेंट्री में इंपैक्ट कब आता है? जब जीआरएन होता है। तो इवन गेट पास होने पर भी आपके अकाउंटिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जब तक जीआरएन नहीं होगा। आपके इन्वेंट्री लेजर पे मटेरियल कभी हिट नहीं होने वाला है स्टॉक में। दिस इज द अकाउंटिंग इंपैक्ट। तो यहां पे गलती करा तो यहां पे भी वही गलती होगी। एंड क्वालिटी चेक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर थिंग। अब सर आ गया गेट एंट्री नॉट डन एट द टाइम ऑफ अलाउइंग एंट्री। सर सिक्योरिटी वाला ना आपके यहाँ पे गेट एंट्री को बाईपास कर देते हैं। अब वो बोलता है ट्रक को अंदर लेके जाओ, जाओ डायरेक्ट जीआरएन करवा। सर कंट्रोल तो ऐसा होना चाहिए कि अगर गाड़ी के पेपर्स भी कंप्लीटेड नहीं है, स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीटेड नहीं है एंड गेट पास नहीं बना है, तो गाड़ी फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर जा ही नहीं सकती है। सर अनऑथराइज्ड में अनलोडिंग क्यों करवाऊं? अनऑथराइज्ड गाड़ी की एंट्री में क्यों अलाउ करवाऊं? एंड सर जीआरएन गुड्स रिसीट नोट के लेवल पे ये कंट्रोल होना चाहिए कि अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने जब तक सिस्टम पे गेट पास नहीं बनाया है तो आपका सिस्टम भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि जीआरएन बना। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप यहाँ पे आइडेंटिफाई ये कर सकते हो, कम से कम एक लेवल ऑफ चेकर है एज अ सिक्योरिटी पर्सन कि हाँ ठीक है हमने गाड़ी को चेक कर लिया और हमने गेट पास बना दिया है। सर गुड्स रिसीव्ड नॉट एज पर पीओ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सर आपसे। गुड्स रिसीव्ड विदाउट पीओ, ये सर वही है इमरजेंसी परचेज। सर मुझे पता है कि मेरे को फ्रॉड तो करना ही है, मेरा इंटेंशन ना बड़ा खराब है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को तो वैसे ने भी बदनाम कर रखा है सबने, तो मैं भी वही करूँ। सर तो फिर क्या होगा? सर मैं एंड मोमेंट पे वेंडर को बोलूंगा कि भैया वेंडर तुम ना एक काम करो, एक मटेरियल की डिलीवरी करवा दो इसकी, मैं बाद में प्योर यूज करूँ। इफ दिस कुड बी द वन केस देन इट इज जस्टिफाइबल टू द सम एक्सटेंट। बट सर अगर ये हैबिचुअल केस हो जाता है तो इसका मतलब क्या है सर? हैबिचुअल केस अगर हुआ तो इस केस में इसका मतलब ये है कि आप वेंडर के साथ में कोल्यूजन करे जा रहे हो, मिल रहे हो और उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। ठीक है मैं तो विदाउट पेमेंट विदाउट पीओ करूंगा, और जब मटेरियल आके कंज्यूम हो गया तो सर उसके बाद अप्रूवल अथॉरिटी क्या ही करने वाला है? उसको तो अप्रूव करना ही पड़ेगा ना। दिस इज द थिंग। सर गुड्स फिजिकली रिसीव्ड इज लेस देन द इनवॉइस क्वांटिटी। सर वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग सर। गुड्स रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, सर ऐसा भी केसेस हो सकता है। अब क्या बोलेगा वो सामने वाला कि भाई एक काम करो मिस्टर स्टोर्स एंड मिस्टर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, मैंने 20 क्वांटिटी ज्यादा भेज दी है, काम करिए आप जो है ना 20 क्वांटिटी रख लीजिए, मेरे को उतना ही पैसा दे दीजिए। आइडियली होना क्या चाहिए कि मैं इस 20 क्वांटिटी को मैं वापस करूं। क्यों? अगर मैं 100 की बजाय 150 क्वांटिटी परचेज करूंगा तो वेंडर मेरे को तो कम से कम कुछ तो ज्यादा डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा? जो डिस्काउंट उसने 100 पे दिया है वही डिस्काउंट वो 150 पे उससे कहीं ज्यादा डिस्काउंट देता। सर दिस इज वन ऑफ द रिस्क। सर दीज आर द कंट्रोल मैकेनिज्म। सर नेक्स्ट है डिले इन अपडेशन ऑफ द सर जीआरएल। मैंने वेंडर को बोला मैं तुम्हारी गाड़ी खाली नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं डालो। सर ये मैं बता रहा हूँ एकदम मतलब लेवल लैंग्वेज में प्रोक्योरमेंट में ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं। सर आज मटेरियल लाके गाड़ी 2 दिन क्यों खड़ी है? उसका तो जीआरएल तुरंत बनना चाहिए ना, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ जस्टिफाइबल रीजन कि गाड़ी खराब हो गई, प्लांट में स्पेस नहीं है, तो समझ में आता है। सर अदरवाइज अगर मैं जीआरएल 4 दिन बाद क्रिएट करूंगा इसका मतलब कैसे? मैं स्टॉक की सिचुएशन को चेंज कर दे रहा हूं।
सर इसमें मैं तो ये भी कर रहा हूँ, स्टॉक को इन्फ्लेट कर दे रहा हूँ, मतलब मैं जितना स्टॉक है फिजिकली कुछ और है, बाद में कुछ है। वेंडर से मैं मिल गया, वेंडर मेरे को पैसे देगा तो जीआरएम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। दीज आर द फ्रॉड्स। इसके लिए सब क्या होना चाहिए, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कि जीआरएम मेरा 1 या 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंटेड जस्टिफिकेशन सो दैट समवन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। What's received not recorded in or recorded in the inventory ledger. This is all about this. So last part is अब सर मटेरियल आपने रिसीव कर लिया है, अब क्या होगा सर, पेमेंट करेंगे। ये तो हुई ना बात सर, मैं पेमेंट तो सर करूंगा, बट सर सबसे बड़ी बात क्या ना, मैं वेंडर का इनवॉइस भी बुक कर लूंगा या नहीं भी बुक करूंगा। आई एम नॉट गोइंग इन दिस इनटू द फ्लो बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट फ्रॉम द रिस्क पर्सपेक्टिव अगर आप सोचो मेरे पास एक 10 वेंडर के मेरे पास 100 इनवॉइसेज है, मैं क्या करता हूँ ना, एक पर्टिकुलर वेंडर को चूज करता हूँ जिसके साथ मेरा कुछ कनेक्शन है। मैं क्या करता हूँ, मैं वेंडर को बोलता हूँ भाई तेरा इनवॉइस मैं जल्दी बुक करता हूँ एज कम्पेयर टू अदर वेंडर्स, एंड योर पेमेंट टर्म से 30 days बट आई मेक यू पेमेंट विद इन 10 days बिकॉज आई हैव द अथॉरिटी टू मेक द पेमेंट। एंड नाउ यू थिंक अगर आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहे हो विदाउट एनी अप्रूवल मैकेनिज्म, so in that case just apply your mind that there's a clear cut fraud indicator. बाकी के वेंडर जिनके पेमेंट टर्म 15 days or 20 days है, their payment are due earlier than this particular vendor, वो वेंडर तो डिस्प्यूट क्रिएट करना चालू कर देंगे। दिस इज द गैप, दिस इज द रिस्क। We already discussed this things now. Inaccurate invoice processing we already discussed. Goods or services received not accounted for in the financial statement. वो मैंने सर जैसे अभी बात करा, मैं आपका इनवॉइस ही होल्ड कर दूंगा, 1 महीने तक आपका इनवॉइस बुक नहीं करूंगा। मंथ एंड पे क्या होगा, वेंडर्स की लाइबिलिटी भी नहीं दिखेगी बुक्स। पता चला कि मेरे पास 10 करोड़ 1 करोड़ का आइटम है, उसका मैंने बिल बुक करा ही नहीं, तो मेरा लाइबिलिटी अंडर शूट। अनऑथराइज्ड और इनएक्यूरेट पेमेंट टू वेंडर्स, सर ये मैंने पहले ही बोल दिया, ड्यू डेट के पहले वेंडर को पेमेंट करा। इसका मतलब अगर आपके पास में अप्रूवल मैकेनिज्म है, कंपनी के पास में एक अप्रूवल मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हो तो समवन शुड रेज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कमर्शियल डिपार्टमेंट विद अ जस्टिफिकेशन दैट यस, कि अगर मेरे को पेमेंट करना है तो उसके पीछे क्या रीजन है, दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। डिलेड पेमेंट टू द वेंडर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। कैश डिस्काउंट नॉट अवेलेबल। सर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो, परचेज ऑर्डर में लिखा है कि अगर आप एडवांस पेमेंट करोगे तो उस केस में वेंडर आपको जो है 5% का डिस्काउंट दे। आपने क्या करा, परचेज एज अ फाइनेंस पर्सन परचेज पेमेंट कर दिया वेंडर को आपने, बट उस केस में हुआ क्या, आपने डिस्काउंट अवेल करा ही दिया। दिस इज अगेन वन ऑफ द रिस्क, आपका रेवेन्यू लीकेज हुआ है। एडवांस पे टू द वेंडर नॉट सेटल्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट प्रोसेसिंग, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इनएक्यूरेट अकाउंटिंग टू द पेमेंट। सर आपके वेंडर के ना 2 अकाउंट है, एक वेंडर कोड एक्स है, एक वेंडर कोड वाई है, दोनों सेम नेम से है। आप इनवॉइसिंग बुक करते हो एक्स कोड में, पेमेंट आप करते हो वाई कोड में। सर अब आप बताओ मेरे को, एक जगह पे आपको वेंडर का एडवांस दिखेगा, दूसरी जगह पे वेंडर की लायबिलिटी दिखेगी। आपने अकाउंटिंग सही करी क्या? नो, आपने अकाउंटिंग सही बिल्कुल नहीं करी। इट मींस आपको अपने वेंडर मास्टर को रिविजिट करना पड़ेगा, और अगर वो डुप्लीकेट वेंडर्स हैं तो विद जस्टिफिकेशन आपको एक कोड को क्लोज करना पड़ेगा। So this is all about the entire procurement to pay process. And I can say one thing, that within these 2 hours, it is not possible to cover each and everything as a part of the risk. Because here in this particular case, you need to apply your 360 degree of the process, your thought process. Because यहाँ पे ऐसा कुछ सेट प्रोसेस नहीं है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या रिस्क होंगे, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का रूट उसके ऊपर। It all depends on the organization maturity level, organization process level, and organization activity level. But as a risk perspective, you need to think that yes, what could be the risk? अगर आप उस धंधे को कर रहे होते तो आप किस एंगल से सोचते with the business scenario, वो चीज अगर आप करके करोगे तो I think you will be able to understand the risk and controls from the procurement to pay perspective.
Darshanji, you are on mute. Yeah. Darshanji, is there any questions? Yes, no, sir. And you had covered excellent. So we have not received any questions from the participants. Yes. Okay. Oh, it's surprise. Yeah, sir. Yes. So yes. So we can proceed to our vote of thanks. It is really a excellent presentation. First, vote of thanks to Preeti Sawala ji, Madam, Vice Chairperson of Board, and excellent expressing opening remarks and insight on the topic. Also, also Vice President of ICA, Nanda sir, who had given the excellent insights for the risk and control towards the risk and control process in procurement to payment process. And also thanks to Jatin Furia sir, who had given the introduction in excellent way, in concise manner to CA Gaurav Misra sir. Gaurav Misra sir has covered the topic excellent way in very pictorial manner. He have a 7-year practical experience and wide knowledge on the subject. And he had explained in very precise manner the importance of risk and control in procurement to payment process. The CA Darshan Shah, on behalf of Board of Internal Audit and Management Accounting ICI, presenting heartily vote of thanks to sir. It is really a excellent 2-hour session, and you covered all the important areas in the very graphical and presenting way. It is really a thankful to you. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. And I'll just for the ending, I'll say thanks to Darshanji and to other moderators, to the Board of Internal Audit and the Standard Board and the ICI committee for giving me this opportunity. And yes, still, if you are participants are having any question, they can reach out to me or any times. And my number was mentioned into the presentation, and I'll be happy to help. Excellent. So you, sir, you had covered all the points very precisely in practical experience, practical example, vendor management subject, procurement, planning, process and control, how to mitigate the risk. So all the topics which really helpful for internal control, which is the need of the current scenario. So thank you very much, sir, once again for your time and your knowledge sharing. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. So we can conclude now this meeting. Thank you, sir. Thank you, sir.